Hello everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, Am I audible good clearly? morning, sir. Yes, sir. Okay. So what we have completed in the last class, what we have done. So we were studying about reciprocating form. So and I have given some task about centrifugal pump derivation for work done. I have given to understand the steps in the derivation of work done in centrifugal pump. Have you done, all of you? Have you done or not? Before we are going to move reciprocating pump, we have to understand the centrifugal pump work done. Okay, so I think all of you students have done the steps for centrifugal pump of the lecture 7. In lecture 7, we are at this step: angular momentum at inlet and angular momentum at outlet. Okay, the velocity was different in a in outlet at inlet. The velocity at out inlet is in right direction, but at outlet it is in left direction. So we have taken right as a positive and left as a negative. I can you can see that here, positive in the right direction and in the left direction. According to this, we have the angular momentum at inlet, that is mvw1 r1, and angular momentum at outlet, it is minus m vw2 r2. So the rate of change of angular momentum is d by dt angular momentum minus outlet angular momentum. Okay, so d by dt of mass is known as the mass flow rate, and it is denoted by m dot. Okay, and both of the things are constant. The velocity and radius are constant. R1 is at inlet, R2 is at outlet. Okay, so in that case the negative and negative becomes positive, so m dot will be comes out as a common. So then we have rate of change of angular momentum is m dot vw1 r1 plus m dot vw2 r2. So we have the equation number 3 where m dot is known as mass flow rate. From equation number 2 and 3, from equation number 2 and 3, where it is equation number 2, one second, one second. तो अभी तक यहाँ पे सही क्लियर है सबको कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और हमने इनर्शिया कैसे निकालते हैं, अगर रेट ऑफ चेंज मोमेंटम बोलते हैं तो वो फोर्स होता है, अगर रेट ऑफ एंगुलर मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं तो वो टॉर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आता है आपको, क्लियर है? Yes, इक्वेशन sir. नंबर, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, वेयर इट इज इक्वेशन नंबर 2, where the equation number 2 here, t equals to rate of change of angular momentum, the equation number 2, this is equation. So putting these values, equation number 2 and 3, putting the 2 equals to 3,
we will have T equals to m dot VW1 R1 plus VW2 R2. That is equation number 4. From 1 and 4 and A and B. What was A and B? A and B, R1 omega equals to U1 and R2 omega equals to U2. Okay, so we have multiply by omega, so when comes under the bracket and it will become R1 omega and R2 omega. Okay, the next step will be 1 omega, R2 omega, and R1 omega will become U1, R2 omega will become U2. So the power formula is m dot V2 U1 plus VW2 U2. This is the general formula for any pump, any type of pump. It can have any type of blade. Okay, but for maximum efficiency, the centrifugal pump is in such a way so that alpha is 90 degree. Alpha is 90 degree. What is alpha? What is alpha? Sir, nozzle angle. Nozzle angle at inlet. Okay. So if alpha becomes 90 degree, what does it mean? This is blade. Alpha is 90 degree means like this. It comes into the pump radially. Can you imagine that? Can you imagine that? This is the circle. This is the circular part of the propeller, and alpha is 90 degree. The water jet coming inside the pump radially. Can you see that? This is radially inlet of water into the pump. Okay, for maximum efficiency of the pump, jet enters into the pump radially. Okay, in that case, alpha is 90 degree. When alpha is 90 degree, means V1 is like that. So what is the horizontal component of V1? What will be the horizontal component of the V1? V1 itself is a vertical, so it will have zero magnitudes in horizontal direction. Okay, horizontal direction. What is the what kind of velocity was there? World velocity. Okay, this comes from this is V1. So what is the components are V1? This is V1 and this is VF1. Okay, so horizontal component will be 0 because V1 is vertical. So wall will be 0, but V becomes, what is the vertical component of V1? It is known as flow velocity. So it will become exactly equal to VF1, flow velocity. But VW1 will be 0. The formula for the power in general form, it is VW1 U1 plus VW2 U2 multiplied by m dot. What is m dot? M dot is the mass flow rate. And we know that radially VW1 is 0. So the formula becomes for power m dot VW2 U2 for maximum efficiency of centrifugal pump. Maximum efficiency of centrifugal pump. Okay. And one more formula type of pump. You know that the water body is going to act up at a height which is HS plus HD. HS plus HD. Okay. What is the weight of this water body? It will be m into g. Okay, but it is not a static mass, it is mass flow rate. Mass flow rate. What is the mass? Mass is density upon volume. Sorry, density equals to mass upon volume. So mass equals to rho into V. Okay,
So rho into V into G is the weight of the water body. But this weight or volume is going as a flow rate. Okay, so it is with respect to time. So what is rho upon T by V by G, and this term is become term is known as flow rate, but it is volumetric flow rate, and this volumetric flow rate once again it is known as discharge. Very important term, discharge. The unit will be, what is the unit of the discharge? And it is denoted by Q. What will be the unit of discharge? What will be the unit of discharge? It is volume upon time. So meter per second. The unit of discharge is unit of discharge is meter per second. Okay, so this particular weight, with respect to time is going to lift up from 0 to Hs plus Hd. So work done per second. Work done per second. We are taking volume per second. The work done per second is mg per second multiplied by displacement. Displacement is Hs plus Hd. Okay, so this is rho T into G into Hs Hd. And this Hs plus Hd can be say that it is a total head or total displacement from where water is going to displace from one point to another point. And this V by T is known as charge. So it is, the formula is rho Q G into H. What is H? To H plus Hd. So and this work done per second is known as power. So the power formula is becomes once again in the terms of discharge, in terms of density, and in terms of total head. Okay, so the power is rho Qg into H. So we can compare both the formula as we have from the different type of velocity, or we can this formula as comes from the velocity triangle diagram, and this formula comes from the energy conservation. P equals to rho Qgh, and this formula is valid for all type of pump or any type of device which is going to do work. Okay, so let's note down the formulas rho Qgh and this formula, because we are going to solve some numerical problem on the basis of these formulas. Note it down from first point to last point. This is general formula A. This is for a special case of centrifugal pump P, and this is on the basis of energy conservation 3. Sorry, C. नोट हो गया? नोट हो गया? हो गया दिनेश कुशवाहा? दिनेश, आदित्य,
हो गया क्या प्रियल जैन? Yes, sir. हो गया. तीनों फॉर्मूला नोट हो गया ना? Yes, sir. ओके, चलिए तो हम जो करंट लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 9. So in lecture number 9 we will see the order in the reciprocating pump. Once again you have to write the each and every steps of reciprocating pump work done. Then we will see the difference between the centrifugal and reciprocating pump, and we will do numerical problem. So just start with these diagrams. You have to write, or we can see, just see the diagram. Where is the point Q? Where is the point P? Where is the point B? And where is the A? Okay, so this is B. This one is A. This is A. This is B. Okay, so we have some notation. We have to take lift the water from here, the storage tank here. Okay, so the total by the pump must be from the point zero level to the HS plus HD. HS plus HD. Right? So here some notations are there. We have to write what are the notation. First is radius R. R is the radius of crank. Radius of crank. Crank is here, which is getting rotated by motor, electric motor. Next is L is known as length. Stroke length of piston. Piston. What is the meaning of stroke? The distance QP or PQ is known as stroke length. Okay, so I'm asking you a question that if crank is rotated by 360 degree, then how many strokes will be completed by piston? 2. 2 strokes. Okay, good. Next is capital D. Is capital D? It is bore diameter. Bore diameter. What is bore diameter? It is cylinder diameter of cylinder. It is what? Diameter of cylinder. Diameter of cylinder. So in question, it can be written as a bore, or we can say it is a diameter of cylinder. Okay. So the what will be the volume of the cylinder? Pi r square h. Yes, pi r square h, but we are not giving the value of radius for the cylinder, and not for the not the height of the cylinder. We are giving the length of stroke cylinder. So it will be pi d square by 4 into L, and this pi d square, not 4, pi d square into pi d square by 4 into L. And we can write this pi d square by 4 as area multiplied by L. This is the volume. This is the volume. Okay. Just start writing notation. Capital N. It is the rotation or revolution per minute of motor, or we can say RPM of motor. अगर मुझे रिवॉल्यूशन पर मिनट मुझे पता है इट इज कैपिटल एन, सो व्हाट विल बी द रिवॉल्यूशन पर सेकंड? रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड आरपीएस. रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होगा?
and by 60. 60. ठीक है, नोट हो गया, नोट हो गया। Yes, sir. Statement. सबका नोट होना चाहिए भाई। अब मैं विद इन दिस वीक आई विल आस्क फॉर द नोट्स वी हैव व्हिच यू हैव completed, you have written in your own language, or we can say from my lecture notes. Okay, so I can offer the notes in this week, and if you will not have the notes, I will cancel all the attendance you have taken from the last lectures. So you have to up to the mark where we have left in the last lecture. You have to write everything, not in the detail, but you can understand from the your short notes. Short notes भी हो सकता है, ठीक है। So we know that the power is rho q g. This will come from the very basic concept, that is energy. Energy per second is known as power. So rho q g h. What is rho? What is rho? It is the Density. Mass density by of the volume. mass by volume, but density of water, because we are studying the hydraulic pumps. Okay, it is the density of water. What is the density of water? Exactly, it is a numerical value 1000 kg per meter cube. You have to remember this, 1000 kg per meter cube. It may possible that it will not come in the question, but you have to remember it is 1000 kg per meter cube. Okay, so what is Q? Discharge. 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 How we will find out this Q? V by T. V by T. It is T. So we have to find out Q. Q is the discharge per second. We have to find out per second. Total volume per second we have to find out. So what is the total volume in a single stroke? Or we can say in a per revolution, how much volume will be discharged from the bottom to top in one rotation? It will be the volume of the cylinder. In a single rotation of crank, piston moves from Q to P and once again P to Q. Okay, so the total volume will be flow from point zero level to the storage tank. Okay, so this volume is for per revolution, per revolution. But we have a motor which is running on electricity. So we have to find out
नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। So this is discharge per second. Okay, if you are going to find out total discharge in n by 16 revolution, n by 60 revolution, it will be q into n by 60, right? Right. In one revolution, the volume per second flow from groundwater to the storage tank, from sump to storage tank, it is capital Q. Okay, but if you are going to find out the total discharge in n rpm, or we can say n by 60 rps, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, कितना रिवॉल्यूशन के बाद टोटल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रिवॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम हो रहा है, कितना वॉल्यूम डिस्चार्ज हो रहा है पर सेकेंड, क्यू। तो n by 60 आर रोटेशन में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई n by 60, and we know that q is, what is the value of q, l E by T into E M by by. पर सेकेंड। पर सेकेंड निकालेंगे तो एक सेकेंड यहाँ रख सकते हैं हम, ठीक है, एक सेकेंड रख सकते हैं। तो यहाँ से रो आ जाएगा, क्यू कितना आएगा, एल ए पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई एन बाई 60 मल्टीप्लाई बाई जी इंटू एच। टोटल एच इज, दिस इज नॉट क्यू, एक्चुअली इट इज पावर, so rho g into lan LAN by 60, but H is HS plus HD. लोअर केस और अपर केस में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, sometimes in the picture, in the diagram it is small hs, small ht, you will understand, right? You can understand. So the power is rho g lan, मैं इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, rho g lan by 60 multiply by hs plus hd. This power will have the motor, so that the water will comes. This is for n revolution. Okay, this is for n revolution. So might be you are thinking that after this revolution, the lifting up power will be stopped. No, because motor is running continuously, so the lifting of power will always be continuous, right? So the formula is rho g lan by 60 multiplied by hs plus hd, but the basic formula is same, rho q g into h. But you have to understand what is capital H. Capital H is hs plus hd. Okay, so now we are going to see the application of reciprocating pump. So just write the steps also, you have written also, and but you have to remember this formula, rho g lan by 60 multiplied by hs plus hd. Application of reciprocating pump in windmills. What is windmills? What is the use of windmills? What is the use? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं किसी एक पिलर पे, रोटेट होता है, वहां पे पंप कहाँ यूज हो रहा है, पंप कहाँ यूज हो रहा है बताइए। ये विंडमिल्स है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, इस पिलर की हाइट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर ऑयलिंग की जरूरत है, ऑयलिंग लुब्रिकेशन की जरूरत है। वो लुब्रिकेशन हम नीचे से
फ्लो करवाएंगे। तो यहाँ पे एक पंप होना चाहिए, ठीक है, तो उस पंप को लिफ्ट करता है यहाँ तक, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है विंडमिल्स में, हाइट ज़्यादा है। सेकेंड इज हैंड पंप। हैंड पंप इज द वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये मैंने बताया था जब हमने स्टार्ट किया था रेसिप्रोकेटिंग पंप। थर्ड इज इन बॉयलर वाटर फीड पंप। बॉयलर में बोले तो वाटर को वाटर को लिफ्ट कराने के लिए बॉयलर में पंप की जरूरत होती है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो वहां पे पंप की जरूरत क्यों है? क्योंकि स्टीम टरबाइन से जब स्टीम बाहर निकल चुका है तो इस स्टीम को कंडेंस किया है कंडेंसर में, कंडेंसर में लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है वाटर, ओके, और उस वाटर को लिफ्ट करना है हमको बॉयलर में वंस अगेन, सो वी हैव टू यूज रेसिप्रोकेटिंग पंप। फोर्थ इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जानते हैं आप? ड्रिप इरिगेशन, अच्छा, रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो डिस्चार्ज हो रहा है पानी, जैसे स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक में पानी कैसे जाएगा? कॉन्टिन्यूस नहीं जाएगा, कभी ऐसे जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम पे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब फ्लो इसका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा कि ऐसे पानी नीचे लगातार कॉन्टिन्यूसली निकल रहा है। आप मतलब समझ रहे हैं आप क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है किसका? पिस्टन का। तो पिस्टन पहले पीछे जाएगा फिर आगे आएगा तब पानी आएगा, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो उस कॉन्टिन्यूस आप देखेंगे इरिगेशन, आजकल इरिगेशन हो रहा है बहुत ही, खेतों में कहीं भी एक पाइप फ्लो कराया जा रहा है और पाइप से हर जगह छोटे छोटे स्प्रिंकल्स, वाटर के स्प्रिंकल्स निकालने हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसमें फ्लो जो पानी हो रहा है इसमें से पानी निकल जाएगा बाहर, लेकिन ये कैसे निकलेगा? एक साइकिल पे निकलेगा, एक साइकिल होगा इसका, कोई फ्रिक्वेंसी होगा, उसी फ्रिक्वेंसी से बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूस बाहर नहीं निकलेगा, रुक रुक के निकलेगा। इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। इससे क्या है, पानी की जो वेस्टेज होती थी वो कम हो गई है ड्रिप इरिगेशन से, और जिसको चाहिए था, जिस प्लांट को चाहिए था, जिस भी क्रॉप को चाहिए था पानी, उसको ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है बाहर, इस फील्ड से बाहर भी निकल रहा है पानी, तो उस वाटर को वेस्टेज से बचाने के लिए इरिगेशन का यूज किया गया था। लेकिन जो मेन पाइप है उसमें जो पानी फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। The fifth one is inflation of tires और फुटबॉल। इन्फ्लेशन आप पता होगा, पंप जो यूज करते हैं वो कौन सा पंप है? रेसिप्रोकेटिंग पंप है। Sixth is reciprocating pumps are generally applied on low flow rate. Flow rate कम होता है बट हाई हेड सर्विस। हाई हेड सर्विस मतलब हाइट बहुत ज्यादा हो तो वहां पे पहुंचा सकता है, लेकिन इसका फ्लो रेट बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। गुड, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ऑल 6 रेसिप्रोकेटिंग पंप। Now the difference between centrifugal and reciprocating pump. This is not we are going to see now. This is homework. This particular सर सिक्स्थ एप्लीकेशन एक बार वापस समझा दीजिए ना। sixth application है reciprocating pump are generally applied on low flow rate. Low flow rate मतलब इसका Q कम होता है, Q कम होता है और हाई हेड होता है। हाई हेड मतलब हाई हेड के लिए यूज किया है, जो HS प्लस HD है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज होगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप इस केस में यूज नहीं होगा, उसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाएगी। आपको पता है जो हम लोग मोटर यूज करते हैं घर में डोमेस्टिक, वो उसकी हेड बहुत ही कम है, उसका हेड कम है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत ही बोल सकते हैं अगर बहुत ज्यादा फ्लोर्स हैं, किसी बिल्डिंग है बहुत बड़ी, उसमें अगर फ्लो कराना है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से काम नहीं होगा, उसमें पंप यूज किया जाएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो हेड का मतलब है हाइट, एच कैपिटल एच कितना है, राइट? यस सर। Sir, third point, Okay. please. यस सर, थर्ड वाला। थर्ड पॉइंट इज इन बॉयलर वाटर फीड पंप। हमने बताया था जो रैंकाइन साइकिल है, बॉयलर है ये, उसके बाद टरबाइन आता है, उसके बाद कंडेंसर आता है,
उसके बाद पंप आता है, ठीक है, ये पंप है, ये बॉयलर है, ये टरबाइन है, ये कंडेंसर है। पंप यहाँ पे है। कंडेंसर के बाद जब बॉयलर से स्टीम बन के निकला बाहर, स्टीम बन के निकला तो स्टीम टरबाइन के अंदर वॉल्यूम उसकी इंक्रीज हुई, तो वर्डर मिला, लेकिन अभी भी वो स्टीम के फॉर्म में है, बट उसके पास एनर्जी अब कम है, वापस जाएगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट पंप में। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अभी स्टीम के फॉर्म में है, तो उतना ज्यादा वॉल्यूम को पंप हैंडल नहीं कर सकता है। तो पंप से पहले कंडेंसर लगाना जरूरी है, सो दैट कंप्लीट स्टीम और गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर विल कम कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पे पंप यूज किया सकता है। पंप काम करता है हाई डेंसिटी के फ्लूइड के लिए, कंप्रेस्ड फ्लूइड के लिए पंप काम करता है। तो यहाँ पे पंप का यूज किया जाएगा ना, बालू में फिर से भेजना है ना स्टीम बनाने के लिए, ठीक है। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग बॉयलर में पंप का क्या काम है। रैंकाइन साइकिल भी देखा है आप लोगों ने, स्टीम टरबाइन में रैंकाइन साइकिल बनाया था इन असाइनमेंट्स, राइट। So the difference between the centrifugal and reciprocating pump, this will be done by you yourself, और ये आपके नोट्स में होना चाहिए, होमवर्क है ये। अभी तक हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप देखा है। आपको 5 डिफरेंस निकालने हैं, 5 डिफरेंस को आपको नोट करने हैं कॉपी में, एक पेज पे ही आ जाएगा ये। और डिफरेंस बिटवीन बहुत सारे डिफरेंस है, अभी मैंने ये जो 6 पॉइंट है इसमें ही दिखा दिया आपको। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर जनरली अप्लाइड ऑन लो फ्लो रेट एंड हाई हेड सर्विस, जस्ट अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। और वी कैन से द एट लो फ्लो रेट and high head service, the centrifugal pump will show the low efficiency. Means the centrifugal pump will work for high flow rate but low head service. Okay, so this is the one of the difference between centrifugal and reciprocating. और भी जो हम लोगों ने प्रिंसिपल में देखा है, वर्किंग प्रिंसिपल में, उसमें भी 2 पॉइंट है, उसमें 2 या 1 पॉइंट है, और बाकी जो उसके कंस्ट्रक्शन है, उसके मोशन है, कैसे हो रहे हैं, वो डिफरेंस बन सकता है। तो टोटल 5 डिफरेंस आपको अपने अपने ही क्लास नोटबुक में ही लिखना है, must be included in your class notebook. Okay, so now you might have your scientific calculators with you. How many of you have? I have. है सबके पास? ओके, तो अवॉइड कीजिए मोबाइल के कैलकुलेटर को यूज करना। साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज कीजिए 100 ms और 82 ms, वो यूज करना है, और उसमें आपको हैंडी बनना है, उसमें यूज करना आपको बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही जल्दी आना चाहिए। और सबके पास कैलकुलेटर होगा तो मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे हम लोग कई सारे इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए कि 2 इक्वेशंस है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब मैं बता सकता हूँ अगर आप सबके पास होगा तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल नोट करो या जैसे भी लिखना है आपको। पहला न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको? Calculate water horsepower for centrifugal water pump if flow rate is 45 liter per hour. Head added to the flow is 10 meter. विजिबल है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको गिवन डेटा लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा आपके पास कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, उस फॉर्मूले को नोट करना है। सबसे पहले तो ये बोल दिया गया कैलकुलेट वाटर हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है? दैट इज पावर, मतलब ये पावर का फॉर्मूला है फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ध्यान से देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने देखा था वेलोसिटी ट्रायंगल में बहुत टाइप के वेलोसिटी थे, बहुत टाइप के एंगल्स थी, वो सब गिवन है क्या इसमें?
वो सब गिवन है क्या? No, sir. No, sir. No. So we have to use the general formula for which was on the basis of energy. Okay. So the power formula is, or we can write the given data first. Given data. Given data. Given data. क्या है सबसे पहले? फ्लो रेट। फ्लो रेट देखिए क्यू गिवन है, क्यू इज 4500 लीटर पर आवर। अब इसको आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालना है, जल्दी से निकालो। कौन निकाल रहा है? निकालिए जल्दी से, बताइए कितना आएगा। जल्दी से 4500 लीटर पर आवर को निकालना है हमें। इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? 1 meter cube में 1000 लीटर। 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो लीटर को कन्वर्ट कीजिए, और आर 1 मीटर से होता है। 3600 सेकेंड। यस, 45 स्क्रीन विजिबल है, इनटू 1/1000 लीटर की जगह क्या लिखूँ अब? मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय आवर्स कितने हैं? 1 घंटा है, 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, 3600। ओके, सो नाउ यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू निकालिए। 1.25 meter cube per second. इतना कम, इतना ज्यादा? सर 1.25 into 10⁻²m³ per second। यस, 1.25 इंटू -2। -2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? हेड गिवन है। हेड की बात की गई, हेड एडेड। हेड एडेड का मतलब इतना हेड तक पहुंचाना है वाटर, तो कैपिटल एच ही गिवन है डायरेक्ट। एच एस प्लस एच डी नहीं, यही है एच। टोटल एच दे दिया है, कितना है? 10 मीटर। ओके, एंड यू नो दैट वाटर विल हैव द डेंसिटी ऑफ 1000 kg पर मीटर क्यूब। And what is the value of G? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से बताइए, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू रो QGH। QGH। जल्दी से बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? रो इज 1000, Q is 1.25 into 10⁻², into G is 9.81 into H. H is 10 meter.
कितना आंसर आया? सर ये जी कहाँ से आया? कौन सा? सर जी की वैल्यू क्या कैसे जी? आई? जी की वैल्यू कैसे आई? कौन है? कौन नहीं नहीं पूछा? सर, यस। सर एच की वैल्यू पूछ रहा था मैं। अच्छा, एच की वैल्यू गिवन है ना, हेड लिखा हुआ है, हेड हेडेड टू द फ्लो इज 10 मीटर। कितना फ्लो कराना है 10 मीटर के हेड तक? ओके सर। कितना है आंसर बताइए? 1225. 1225। 1225. 1225 क्या है यूनिट? वॉट। What? ओके, तो एक हार्स पावर में कितना होता है वॉट? एक हार्स पावर में कितना होता है? 740. 746 वॉट। ओके, 746 वॉट। तो कन्वर्ट कीजिए इसको हार्स पावर में, पावर टू। So power equals to 1225 upon 746 horse power. कितना हॉर्स पावर है बताइए? वैल्यू जल्दी बताओ कितना होगा? 1.64. 1225 1.64 is the horsepower of the centrifugal pump. Horsepower of the centrifugal pump. Okay, आसान है। सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन कीजिए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जल्दी से, सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा, गिवन डेटा, just read the question and just write the given data in appropriate notation. The speed of the motor attached is water enters in the impeller. The speed of the motor attached and होना चाहिए था, and water enters in the impeller radially. ये radially पहले ये दिया radially with the speed of 50 meter per second. ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, देखें क्या है। The speed of the motor is given. Speed of the motor is given 1500 rpm. Okay, and water enters in the impeller readily with the speed of 15 meter per second. The blade inlet, तो लिखते जाएंगे एक एक करके। तो rpm is given, that is 1500. Okay, rpm. Water enters radially, तो रेडियली आप नोट कर लेंगे। रेडियली पर लिखते ही हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाती हैं, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, VW1 equals to 0 and V1 equals to VF1. Okay, so we will have three values, just writing the flow at inlet radially. And what is value of V1? 15 meter per second. 15 meter per second. The blade angle at inlet and outlet are 30 degree and 20 degree. 30 degree is theta is 30 Theta. degree. Yes, phi is 20 degree. What should be the power of pump if inner and outer radius of impeller are 5 centimeter and 20 centimeter? That is R1 is, you can write it into Encase form, 0.05 meter. R2 is 0.2 meter.
jet is exit out with absolute velocity of 10 meters per second. What is absolute velocity? V2. V2 is 10 meter per second. At an angle, what is the angle for V2? Beta. Beta equals to 45 degree. And the mass flow rate m dot is 20 kg per second. Okay. So we need to find out the power. सर ये What is the अल्फा के आगे क्या formula? लिखा हुआ है? Alpha equals to 90 degree. 90 degree. Alpha is 90 degree because radially flow. इनलेट पे रेडियली फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ये रेडियली है, रेडियली है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब ये V1 है, 90 डिग्री पे पंप के अंदर जा रहा है, जेट की जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो कितना है 90 डिग्री। पावर का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पे सारी एंगल गिवन है, बहुत सारी वेलोसिटी गिवन है, तो हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, m डॉट VW1 U1 प्लस VW2 U2. Okay, but the first term will be 0 because VW1 is 0. VW1 is 0. 0. ऐसे तो इनलेट पे ऐसे हो रहा है, ऐसे और ऐसे, ये है VR2, ये है V2 और ये है VF2। V2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, VW2। VW2 VW2 क्या होगा, V2 cos beta. V2 cos बीटा। इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से, V2 cos बीटा और U2 बताना है। 5 root 2. कितना, 5 root 2. 5 root 2 मीटर पर सेकेंड। एंड U2 क्या होगा, R2 इंटू ओमेगा। What is the value of omega? It is 2 pi n by 60. R2 कितना है हमारे पास, 0.2 मीटर, 0.2 into 2 pi n by 60. Value of n is 1500 RPM. Sir 10 pi. कितना आ गया ये, Sir U2 10 pi आ जाएगा। 10 pi मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों वैल्यूज आप रखिए इसमें, पहले फॉर्मूले में मास फ्लो रेट आपको पता है, मास फ्लो रेट इज m dot is 20 kg per second, 20 multiply by VW2 is 5 root 2 multiply by U2 is 10 pi। बताइए कितना आ रहा है, 1000 root 2 pi. 1000 रूट 2 पाई। एग्जैक्ट बताओ, रूट 2 को वैल्यू रख के बताइए। 5 root 2 multiply by 10 into pi into 20। कितना हुआ, 442.88 और we can say 4.442 kilowatt।
राइट। सही है। Yes, sir. ओके, तो ये भी आसान है, आपको बस समझना है कि रेडियली दिया हुआ है या फिर नहीं। अगर रेडियली दिया है तो बहुत सारी चीजों का यूज ही नहीं है। किस किस चीजों का इसका यूज नहीं है, इसका यूज ही नहीं है। थीटा का यूज है क्या, इसका भी यूज नहीं है। फाई का यूज है, फाई का यूज है या नहीं, इसका भी यूज नहीं है। बीटा का यूज है। आ रही बात समझ में? तो आपको समझना है कि ये रेडियली गिवन है या फिर रेडियली नहीं है। रेडियली नहीं है तो आपको जनरल जो भी फॉर्मूला है हमारे पास VW1 और U1 दोनों निकालना पड़ेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सॉरी रेसिप्रोकेटिंग पंप है। थर्ड, गिवन डेटा बताओ। मैथ्स की क्लास कितने बजे है? 4 बजे सर। अच्छा 4 बजे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बस, उसके बाद हम वी कैन सॉल्व। गिवन डेटा जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सर गिवन एच है, हो ये जाएगा 6 + 40। 6 + 40। ये नहीं, हम लोग जो हमारा सबसे पहले हमारा नोटेशन क्या है, ये 6 मीटर एबव द ग्राउंड, एबव टू ग्राउंड। तो HS है या HD है, ये HD। HD कितना है, 6 मीटर। ओके, द स्पीड ऑफ द मोटर इज 1000 RPM, that is 1000 RPM. The bore diameter of cylinder is capital D is 15 centimeter, that is 0.15. Stroke length is capital L, that is 72.5 centimeter, 0.725 meter. Find the power of the pump if water is available at 40 meter below the ground. 40 meter below मतलब HS suction height, that is 40 मीटर। आप जल्दी से जल्दी इसका डायग्राम भी बना सकते हो। डायग्राम बनाओगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ये पंप आप बना सकते हो। ये हाइट कितनी गिवन है, 40। ये हाइट कितनी गिवन है, 6। ओके, ये डायमीटर कितना गिवन है, 0.15। लेंथ गिवन है, स्ट्रोक लेंथ, ये कितना है, 0.725। तो ये पंप का डायग्राम जल्दी जल्दी आप बना दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल H का मतलब क्या है और HD और HS का मतलब क्या है। तो HS और HD से आपको पता चल जाएगा कि टोटल हेड कितना होना चाहिए, 46 मीटर। पावर कैसे निकलेगा, P = रो Q G H। इससे हमने फॉर्मूला निकाला था, इसी से हमने फॉर्मूला डेराइव किया, इसी फॉर्मूले से। तो हमारे पास था रो G लैन बाई 60 multiplied by HS plus HD, or we can write capital H only, HS plus HD। तो जल्दी से इसमें पुट कीजिए वैल्यूज। रो आपको गिवन नहीं है, बट यू नो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube, and you have the value of small g. Just put the values and find the value of power. आपको गिवन डेटा हमेशा MKS में पुट करना है। गिवन होगा, CKS में भी हो सकता है,
बट आपको जो गिवन डेटा आप लिखोगे वो डायरेक्ट कन्वर्टेबल होगा, कन्वर्टेड होगा, ऑलवेज ऑलरेडी कन्वर्टेड होगा इन एमकेएस फॉर्म। बताइए रो कितना है 1000, जी कितना है 9.81, लेंथ कितनी है एल 72.5 नहीं 0.725 0.725। एरिया की जगह पे आप डायरेक्ट एरिया क्या है पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो ये रख दीजिए पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 0.15 स्क्वायर बाई 4 एरिया इंटू एन, एन कितना है 1000, 1000 है। ओके, एच कितना है टोटल, टोटल एच इज 46 मीटर, मल्टीप्लाई बाय एच एस प्लस एच डी, 40 प्लस 6 लिखो या 46 डायरेक्ट लिखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। बताइए वैल्यू कितनी आ रही है, बताइए वैल्यू कितनी आ रही है, सर बहुत बड़ी आ रही है। कितनी आ रही बता दो। 96,210। 96,000, 96,000 96210.5। किलोवाट में बता दो आप, डायरेक्ट किलोवाट में बताओ, डिवाइडेड बाय 1000 करके 96.2। 2 किलोवाट, ध्यान रहे किलोवाट लिखा हूं मैं, ठीक है, तो इतना पावर तो होता है ये पंप का ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑल थ्री न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी, आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि गिवन डेटा क्या है और ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा व्हाट काइंड विच फॉर्मूला इज गोइंग टू क्लिक ऑन योर माइंड and just use it and use properly by scientific calculator, okay, scientific calculator। और ये सब जो वैल्यूज आ रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि पहले रो से जी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, फिर एच एस प्लस एच डी जोड़ते हैं, मतलब ये जो स्टेप्स हैं इसमें 5 से 10 स्टेप लिख देते हैं। तो ध्यान रहे ये इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं कि आप मैथमेटिक्स का स्टेप्स दिखा रहे हो तो उस पर मार्क्स मिलेगा, आपका आंसर डायरेक्ट इसके बाद ही आ जाना चाहिए कैलकुलेटर, बाय यूजिंग कैलकुलेटर आपका इस स्टेप्स के बाद ही आंसर आना चाहिए 96.2 वॉट, ओके। आपको ये नहीं कि अब इसकी वैल्यू अलग से निकाल रहे हो फिर रख रहे हो रख रहे हो, इससे स्टेप नहीं बढ़ाना है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। और वो भी मैथमेटिक्स छोड़ो, मैथमेटिक्स में तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन उतना नहीं है कैलकुलेटर में, आपको बस प्रूफ निकालना होगा, कुछ वेरिएबल और नॉन जो भी वेरिएबल है कांस्टेंट उनकी वैल्यूज निकालनी होगी। जो कैलकुलेटर का यूज जो कैलकुलेशन होती है वो आप मैथमेटिक्स में 10th या 12th तक पढ़े होंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए, इसीलिए आपको कैलकुलेटर दिया गया है साइंटिफिकली। सर जैसे ये एरिया वाला जो यूनिट है, जो एरिया वाला जो है उसके अंदर भी अगर कैलकुलेटर में फीड करेंगे तो प्रॉपर आंसर आएगा। यस वही मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेटर आप लोग रखिए, अगर आपके पास जब सबके पास हो जाएगा तो ये मैं बताऊंगा कि ये वन एक ही, ये तो छोटा सा कैलकुलेशन है बहुत, अगर इसमें बहुत सारे साइन के भी फंक्शन हो, कॉस के भी फंक्शन हो, साथ में ब्रैकेट हो, स्क्वायर भी हो, तो उन सबों की वैल्यूज एक बार में डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैसे आएगा, कैसे ब्रैकेट को प्रॉपरली यूज किया जाएगा, ये जो ब्रैकेट कैलकुलेटर में यूज किए जाते हैं, ब्रैकेट्स आपने गलत लिखा तो मैथ एरर या सिंटैक्स एरर ऐसे कुछ आएगा, गलत एरर आ जाएगा कैलकुलेटर में, तो आप परेशान हो जाओगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर टाइम लगेगा, फिर इसी क्वेश्चन में लगे रह जाओगे। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग वही फर्स्ट ईयर में हो तो इसकी प्रॉपरली यूज कीजिए, और ये अलाउ किया जा रहा है कि कैलकुलेटर यूज करना है तो उसको यूज करो, ठीक है। चलिए अभी तक किसी को डाउट है, अभी तक पंप्स में, हाइड्रोलिक पंप्स में हमने साइंटिफिकल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप देख लिया है, पूरा क्लियरली समझ लिया है, न्यूमेरिकल भी कर लिए इस पे, और ये न्यूमेरिकल ये प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल थे, मतलब रियल लाइफ पंप, हमने पंप का पावर फाइंड आउट किया है कि कितने पावर का पंप होना चाहिए, तो इस तरह के न्यूमेरिकल हमने कर लिया है। बाकी किसी को और नहीं समझ में आया तो डाउट कर सकता है।
कहाँ पे नहीं समझ में आया ये पूछ सकता है अभी। अब हमारे पास पंप के टोटल 3 लेक्चर्स हो गए, 7, 8 एंड 9। बताओ सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। सर जो वेरी हाइड्रोलिक पंप का इंटरेस्टिंग। क्या? सर जो हाइड्रोलिक पंप का डायग्राम था ना स्टार्टिंग में, क्रैंक और कनेक्टिंग रोड हाँ वाला, हाँ हाँ। स्टार्टिंग में जो था, ये उसमें स्ट्रोक कहाँ पे बताया था आपने? यस यहाँ सर। ये वाला ये क्या चीज? स्ट्रोक आपने कहाँ पे बताया था? है हाँ स्ट्रोक, ये क्यूपी लेंथ है ना, लिखा है मैंने यहाँ पे देखो, ये जो यस सर। क्यूपी लेंथ लिखा हुआ है, क्यूपी। यस सर। पिस्टन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है। ये मूव कहाँ से कहाँ करेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्यू से पी गया तो एक स्ट्रोक हो गया, पी से क्यू आया तो दूसरा स्ट्रोक हो गया। और इसी मोशन में ये क्रैंक यहाँ से बी से ए पे पहुंचेगा और ए से बी पे वापस आएगा इसी में, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने बोला कि एक क्रैंक जब एक रोटेशन लेता है टोटल, तो पिस्टन कितना स्ट्रोक मूव कर जाता है? एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, तो 2 स्ट्रोक हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया? और इसको और भी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ही पिस्टन और सिलेंडर है, यही आईसी इंजन में यूज होने वाला है, सिलेंडर एंड पिस्टन। तो इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि सर्कुलर सिलेंडर है और एक सर्कुलर डिस्क जैसा पिस्टन है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क जैसा पिस्टन है, ऐसा ऐसा सर्कुलर डिस्क जैसा पिस्टन है जो कि आगे पीछे मूव करेगा सिलेंडर में, इसकी वजह से पावर जनरेट होगी। ये पंप में हमने क्या किया, यहाँ पे पावर दिया इलेक्ट्रिक पावर, ये रोटेट हुआ और पिस्टन मूव किया। अब आईसी इंजन में क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शन और वी कैन से केमिकल कंबस्शन। उस कंबस्शन की वजह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। उसकी वजह से ये रोटेट होगा, ये आगे जाएगा, ये घूमेगा, फिर क्रैंक घूमने लगेगा। मेन पर्पज आईसी इंजन में यूज है कि क्रैंक को रोटेट कराना है। अब इस क्रैंक को यूज कर सकते हैं हम व्हील्स को रोटेट कराने में, व्हीकल्स के व्हील्स को रोटेट कराने में। तो जस्ट अपोजिट है पंप के, और खासकर रेसिप्रोकेटिंग पंप का जस्ट अपोजिट है आईसी इंजन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको माइंड में अपने रखिएगा, उसके बाद हम लोग वहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको याद रखना कि जस्ट अपोजिट है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, ओके। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आईसी इंजन। लेट मी टेक योर अटेंडेंस। Okay, thank you. You can leave now. थैंक यू।